Okay, students, so a very good morning to you all and welcome to the class, English class. And today we'll be doing a very interesting poem that is obviously the first poem of your English book, Honeydew. And the name of the poem is The Ant and the Cricket. Okay, and this is adapted from Aesop's Fables. Now, basically, first of all, when you are going to study a fable, that is a poem, that is basically a fable, you should know what a fable is. Fable is a story. Okay, what is fable? Fable is a story जिसके अंदर characters कौन होते हैं? Basically, the characters are animals. And a fable always conveys a moral. हमेशा एक moral मिलता है हमें fable में से. So this poem is about two animals, that is an ant and a cricket, and it contains an idea of far-reaching significance. मतलब बहुत importance की एक बात बताता है ये हमें, and which is true of the four-legged cricket as of the two-legged one. And surely you have seen a cricket that has two legs, and obviously you must have seen a cricket. Cricket basically हिंदी में cricket होता है झिंगूर. You must have heard of an animal named as झिंगूर. तो ये झिंगूर नाम के एक एनिमल के बारे में है, ठीक है. तो ये जो हम आज पोएम पढ़ेंगे ना, इट्स रियली हैविंग अ फार रीचिंग इम्पोर्टेंस ऑफ इट्स ओन. जितना कि वी कैन से फोर लेग्ड जो हमारा क्रिकेट है वो उतना इम्पोर्टेंट और उतना ट्रू है, उतना ही टू लेग्स वाला इम्पोर्टेंट एंड ट्रू है. सो ऑब्वियस सी बात है दैट यू मस्ट हैव सीन, आपने फोर लेग्ड क्रिकेट नहीं देखे, यू मस्ट हैव सीन अ टू लेग्ड क्रिकेट. ओके, so basically the thing that you have to understood over here is that you are going to study a fable, and fable has the characters, those are animals. And in this fable there are two animals as the main characters, one is an ant and the second one is a cricket. And this particular poem, it conveys a moral of its own. So see, a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, nor a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? Now see, a young silly cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. इसका मतलब क्या है? एक बहुत ही सिली, दैट इज ना समझ, और बहुत ही हम बोलेंगे जैसे होता है ना सेंसलेस काइंड ऑफ अ क्रीचर, वैसा एक क्रिकेट था. एंड ही वाज अकस्टम्ड टू सिंग. वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता था? सिर्फ मौज मस्ती करता था, गाने गाता था, पूरा दिन एंजॉय करता था, नथिंग एल्स. थ्रू दी वार्म समर सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, दैट इज समर चल रहे थे, बहुत ही हॉट एंड बहुत ही सनी डेज थे, धूप वाले दिन थे. एंड वी कैन से ड्यूरिंग दैट दोज डेज, और ये कंटिन्यूसली ऐसे ही अपना गाना गा के अपना समय स्पेंड कर लेता था. नथिंग मोर देन दैट ही यूज्ड टू डू. एंड ही बिगिंस टू कंप्लेन. एंड जब उसे खाने को कुछ नहीं मिलता ना, तो वो क्या करता? कंप्लेंट करना शुरू कर देता. व्हेन ही फाउंड एट होम दैट हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम, कि विंटर्स आ गए हैं. नाउ इन विंटर्स दे यूज्ड टू स्टे इनसाइड अंडरग्राउंड. विंटर्स में ही अपने घरों में रहते हैं, दे डू नॉट गो एनीवेयर. एंड द cricket says that now winter has come and my cupboard is empty, there is nothing to eat, and what I am going to do? So he starts complaining about that. Not a crumb to be found, एक छोटा सा खाने का टुकड़ा भी नहीं मिला वहां पे. On the snow covered ground, on the ground that was covered with ice. Nor a flower could he see, एक फ्लावर भी नहीं दिखाई दे रहा था. Nor a single flower on, nor a leaf on a tree, and not a single leaf could be seen on the tree. Oh, what will become of me, says the cricket of me. अब क्रिकेट बेचारा इस समय में बोला मेरा क्या होगा, अरे अब मेरा क्या होगा, आई रियली डोंट नो नाउ. सो अल्टीमेटली इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में व्हाट वी फाइंड आउट दैट ह्यूमन बीइंग समटाइम अपने अच्छे समय को ना, व्हाट दे डू, यूजलेसली दे वेस्ट करते हैं उसको, जस्ट इन सिंकिंग एंड डांसिंग एंड जस्ट मेकिंग हैप्पी इन अ यूजलेस मैनर.
बल्कि ऐसा करने से क्या होता है, whatever money we have या whatever energy and efforts we have उसको हम वेस्ट कर देते हैं and we get empty. And when the difficult time comes, जब मुश्किल का समय आता है, that time we really feel कि अगर हमारे पास में मनी होता या अगर हमारे पास में सामर्थ्य होता तो हम कुछ कर पाते, बट आज हमारे पास में वैसा कुछ भी नहीं है। अतः उसके पास, हम बोलेंगे कि उसके पास रिग्रेट के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा। देयर इज नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट गिल्ट आर लेफ्ट टू हिम। सो दिस इज द सेम विद द क्रिकेट। नाउ व्हेन द टाइम्स वर देयर कि वो अपना खाना कलेक्ट करके रख सकता था फॉर दीज हार्ड डेज, दैट टाइम ही यूजलेसली वेस्टेड and now he is just regretting because winter has come. He just could not see a single leaf on a tree, single crumb to be eaten he could found, kuch bhi nahi. And that time he is just saying that, oh, what is going to become of me, I really don't know. Okay, so at last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to the miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. And at last, by starvation and famine made bold, and last क्या हुआ, भूख, ठीक है, स्टारवेशन इज भूख, फेमाइन जब आपके पास कुछ नहीं बचता है तो उसमें इट मेड बोल्ड। बोल्ड कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, इट जस्ट मेड बोल्ड मीन्स अकाल आ गया, ठीक है, साहसी, वो बहुत उसमें हिम्मत आई। ऑल ड्रिपिंग वेट, पूरा गीला, एंड ऑल ट्रेमलिंग विद कोल्ड, और गीला होने से जस्ट ट्रेमलिंग विद कोल्ड। अवे ही सेट ऑफ टू द माइजरली एंट, अब उसे मदद तो चाहिए थी, व्हाट ही डिड, he just set off to the miserly ant. Miserly ant means एक ant, एक चींटी के पास गया वो मदद मांगने के लिए, एंड वो चींटी जो बहुत ही कंजूस चींटी थी उसके पास में गया टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, ये देखने के लिए कि क्या उसे जीने के लिए कोई सहारा वो चींटी दे सकती है। इन ऑर्डर टू जस्ट टू कीप हिम अलाइव वुड दैट एंट ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो उससे बारिश से बचने के लिए शेल्टर देंगी, and a mouthful of grain and some grains to eat. He wished only to borrow and repay it tomorrow. He says that I want it as a help and I want it that I just want to borrow it from you. मैं सिर्फ ये आपसे borrow कर रहा हूँ, that is मैं आपसे उधार ले रहा हूँ, and when time comes I am going to pay it back to you. तो ये time आते ही I will pay it back to you, मैं आपको इसको वापस दे दूंगा। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर एंट ने उसकी मदद नहीं की देन ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारा क्रिकेट है ना इज गोइंग टू डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। सो वी कैन से कि वेन एवर हंगर जो होता है ना, हंगर एंड द लैक ऑफ समथिंग इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो किसी को भी एफर्टफुल बना सकता है, एंड जो हमारे मुश्किल समय होता है ना उसको हम हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। लाइक कहने का मतलब है, अगर इफ यू फाइंड समवन इन सम ट्रबल यू शुड ऑलवेज गो एंड हेल्प दैट पर्सन। आप हमेशा किसी की मदद करो, लेकिन बट जो माइजर पीपल होते हैं ना दे डू नेवर लाइक दिस, वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। माइजर पीपल नेवर डू लाइक दिस। तो सिमिलरली ये जो माइजर एंट थी ना हमारी, उसने भी ऐसा नहीं किया। शी ऑल्सो जस्ट डिनाइड दैट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. But we ants never borrow, we ants never lend. Now ant says to ant ने cricket से क्या बोला, that I am your servant, I am your servant, I am your friend, both. But हम ants का ना एक principle है life का, and the principle of our life is that we ants never borrow and we ants never lend. हम ना तो कभी किसी से उधार लेते हैं ना कभी किसी को उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, quoth the cricket, not I. But ant asks a question to cricket, and क्या क्वेश्चन पूछा, ant says, but tell me my dear cricket, when weather was warm, क्या तुमने अपने लिए कुछ भी बचा के नहीं रखा, कुछ भी नहीं कलेक्ट करके रखा। quoth the cricket, that is spoke the cricket, उसने क्या आंसर दिया, not I, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, I didn't do anything like this. My heart was so light that I sang day and night.
For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the ant, dance the winter away. He says कि मेरा जो मन था ना, my heart was so light, so happy that मैं पूरी इतना ज्यादा enjoy करता था, इतना प्रसन्न था कि मुझे कभी इन चीजों की परवाह ही नहीं हुई. I sang the day and I sang the night. मैं दिन में भी गाना, रात में भी गाना. For all nature looked gay because all the nature around me was looking very happy, and looking at the happiness of the nature, I myself was getting happy. You sang, sir, you say. Now ant says, क्या कहा आपने? That you sang. आपने क्या कहा कि आप गाते ही रहे एंड आपने कुछ भी कलेक्ट नहीं करके रखा, आपने इस हार्ड डिफिकल्ट टाइम के लिए कुछ भी नहीं रखा. गो देन, तो फिर जाओ, सेज द एंट. एंट ने कहा, डांस द विंटर अवे. और ये जो विंटर है ना, इसे भी डांस करके दूर भगा दो. डांस द विंटर अवे, इसे भी दूर भगाओ. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. And thus ending, उसने अपना छोटा सा जो डोर था, जस्ट लिफ्टेड द विकेट, जो उसका दरवाजा था, डोर था, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट. और वो जो छोटा सा जो क्रिकेट था ना, उसे दरवाजे से बाहर कर दिया. Fox called this a fable. Fox जो थे वो इसे क्या कहते हैं? Fable. I'll warrant it's true, and I just warrant I can prove it that it is true. This is a fable. Some crickets have four legs and some have two. Because I can say that there are some crickets who have two legs and there are some crickets who have four legs. So from this last stanza, what we get is there are so many people we can find around us. So at present, they are very happy. Okay? And because of present happiness, they do not take pain to think about the future. And that is why they just be careless. And because of this careless thing, they never save anything for the future and for the difficult time. And along with that, there are some weak people. Okay? Some poor people जिनकी कि हम बोलेंगे दैट नोबडी हेल्प्स देम, बल्कि उनका मजाक उड़ाते हैं. सो दैट सम हाउ वी शुड ब्रिंग चेंज इन आवरसेल्व्स, कि हमें क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज मेक आवरसेल्व्स सो गुड दैट हमें किसी से कभी कुछ हेल्प मांगना नहीं पड़े. बिकॉज इफ वी आर नीडी ना, इन टाइम्स ऑफ आवर नीड, nobody is going to help us, rather they are going to make fun of us. So sensibility is what? That we should make ourselves that self sufficient, so that we should not ask or we should not borrow anything from anyone. Okay, so this was basically the poem adapted from Aesop's fable. So see students, this was the basically we can say the poem, and इस poem से हमें क्या lesson मिलता है? That nobody knows कि आने वाला समय कैसा होने वाला है. So just thinking about that difficult time, आज खुश हो जाना और क्या करना है? Make happy your today but happier tomorrow. We should always focus on be happy today but make our tomorrow more happier. And this we can do how? By saving for future. We can make our future, our tomorrow happier. And उसके लिए हमें starvation and sorrows को remove करना पड़ेगा. And then that we can remove अगर हम sensibly work करेंगे, only then. ठीक है? वी शुड, ऐसा नहीं होना चाहिए दैट वी शुड जस्ट कीप थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड हम फ्यूचर को इग्नोर करके चले. नो, वी शुड नेवर डू दैट. So see, now look at the working with the text part of the poem. The cricket says, oh, what will become of me? When does he say it and why? Now cricket ने क्या बोला? Oh, what will become of me? ऐसा उसने कब बोला and why? So the cricket says it when winter comes and his cupboard is empty. ठीक है? And इसने ऐसा क्यों बोला? He says so because in the lack of food he is going to die of starvation and sorrow. Now, next is find in the poem the lines that means the same as neither a borrower or nor a lender be. Okay, now see, we ants, इसकी lines क्या है poem के अंदर? We ants never borrow, we ants never lend. Okay, good. So see, what is your opinion of ants principle? तो ये जो ants का principle है ना, that we ants never borrow and we ants never lend, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? What's your opinion? Is it right or wrong? Yes, in my opinion, ants principle are right. We must always save for future.
and the idlers must learn a lesson. And जो इस चीज को समझदार है ना, जो इस चीज को समझते हैं और जो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल स्टारवेशन की कगार पे आ चुके हैं, they should really learn this lesson that we have to make ourselves self-sufficient, so that we do not need to borrow anything from anyone, because nobody is going to lend us anything. We will otherwise die of starvation and hunger. The ant tells the cricket to dance the winter away. Do you think the word dance is appropriate here? If so, why? So see, the word dance is appropriate. Yes, because the ant uses it strangely. Cricket shows negligency towards food, saving for winter. क्रिकेट ने क्या शो किया? नेग्लिजेंस, कि उसको विंटर्स के लिए फूड सेव नहीं करना है. He sang day and night in gay summer and spring, so he should dance now in frosty winters. वो day and night in gay, in happy summer and happy spring, he continuously kept on singing. So he should dance now in the frosty winter and send the winter away. So now, question 4. Which lines in the poem express the poet's comment? Read them aloud. कौन सी lines है poem में जो express करती हैं poet's comment? Now see. Folk calls this a fable, and I will warrant it true. These are the lines. What are the lines? Folks call this a fable, and I'll warrant it true. Some cricket have four legs and some have two. Some crickets have four legs and some have two. So this is basically a comment from poet. Now, write this comment in your own words. Now, this is make happy your today but happier tomorrow. अपना आज तो happy कर लो, but इस चीज पे focus रखो that you have to make your tomorrow happier by doing what? By saving for future and remove starvation and sorrow. By saving for future, you can remove what? You can remove the starvation and you can remove the sorrow. So this is, we can say, the working with the poem question answers. I hope you all understood it well. Okay, so just go through the poem. If any doubts, you can clear it with me. And we all, once again, at the last, I am going to tell you again the moral. So basically, fable is a poem which has the characters of animal, and the second feature of a fable is that it has a moral in it. And in this, by this poem, what moral we get? That we should always make our present happy, but we should focus on making our tomorrow happier. By doing what? By saving for future, by not neglecting it. Okay, because if we save for future, starvation and sorrow will be removed and we will be happy forever. Okay, so see, because it is also again a true that in need time, in the time when we need help, there will be many people across us who will not help us. So we should make ourselves that self-sufficient that we should never be in a position that we have to borrow anything from anyone. So make yourself self-sufficient by thinking sensibly, by acting sensibly. Okay? Good? Chalo, theek hai. So this is all done with the poem part today, explanation, text, and along with that, the working with the poem exercise part. Okay, students, so this is all for today's class. So now you just go through the text. If there are any problem with you, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है with the text, if you find any problem in any word or any line or any particular stanza, any sort of difficulty, any sort of problem, any queries, you can ask me. Okay, so I'll be here to clear all your queries. And this is all for today. We'll be meeting in our next class with a new topic. Till then, just go through the topic well and take care of yourself.